तो गाइस यहाँ पर लोकअप का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है और पहले ही एपिसोड में दोस्तों आपने देखा था कि सूफी मोतीवाला ने वरुण यादव पे एलिगेशन लगाए थे, यानी कि लैला पर एलिगेशन लगाए थे कि वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं या फिर उनके खिलाफ कंटेंट बनाते हैं या उनको डीमीन करते हैं। तो इस तरह की बातें बोली थी। हालांकि जो लड़ाई थी वो सूफी मोतीवाला और लैला में ही हुई थी, मतलब जो भी बात हुई थी। लेकिन दोस्तों लैला को इसी मुद्दे पर ही घेरा गया सूफी मोतीवाला की तरफ से। अब लड़ाई दो बंदों में हो रही है, लेकिन लैला पर एलिगेशन ये लगाया कि ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था। तो ऐसे में दोस्तों तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटी सामने आए हैं जो लैला की साइड ले रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों सिद्धार्थ भारद्वाज, जो कि हमें स्प्लिट्सविला और द 50 में भी देखने को मिल चुके हैं, वो भी लैला की साइड ले रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। I do not speak about reality shows or discuss them if I'm not a part of it, but yesterday's episode of Lockup has my attention. Sufi Motiwala, whose entire career is based on dissing and disrespecting people on the basis of what they are wearing and their fashion sense, has just called Laila a gawar, uneducated, cringe content and what. Now let me tell you, cringe content is not Laila's fault. Cringe content is the fault of the Indian audience because they are buying only cringe content. At least Laila is better than the people who are selling cringe content in the name of religion and communities. Laila should not be called gawar or uneducated because you do not know how qualified or how educated Laila is. On the basis of him not being able to speak in English, he cannot be called a gawar or uneducated. As a matter of fact, my hold on the English language is probably way better than Sufi Motiwala and a lot of other elites who think that talking in English is like driving a verbal Ferrari in this country, which it is not. English in no way is a parameter to decide who's educated, who's uneducated. I am barely a 12th pass. I picked up my English from watching American TV shows, English TV shows, traveling, talking to people, because I'm good with languages. Laila is probably just not good with languages and hence he is not great with English. आखिरी चीज मैं हिंदी में रखना चाहूंगा, कोई जरूरत नहीं है हर बात पे कम्युनिटीज को बीच में लाने की। ठीक है, करण जौहर का मजाक बहुत लोगों ने बनाया इंडियन टेलीविजन पे, उसकी मिमिक करके, उसके कैरेक्टर को प्ले करके। ही इज नेवर क्राइड लाइक अ बेबी ऑन कैमरा एंड सेड ओ यू आर मेकिंग फन ऑफ द होल LGBTQ community because you are making fun of me. It is between two individuals. Okay, I have a lot of LGBTQ friends and I have utmost respect for the community and for the work they do for the community. Everybody is treated same. Not with everything you have to bring communities in the middle. Deep down, Laila is a great guy at heart. I refuse to believe that he has a bad heart or he's a bad person because he's taken all that beating you guys were giving him very graciously and very calmly. Okay, he's very innocent and that is why I feel he's cool and I'm on his side in this whole situation.